यहाँ तक हो गया था। प्रीवियस क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किए थे different type of synapse, chemical synapse and electrical synapse with characteristics. Now I told you there are two different type of neurotransmitters are there. What are the two different types of neurotransmitters? इस चैप्टर का ठीक है करते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। So there are two different type of neurotransmitter. 145 में मुझे याद करा था, ठीक है 145 में मुझे याद करा था। टेस्ट है तो उसके लिए क्वेश्चन मैं पूछूंगा, पढ़ लिया है ना, हो जाएगा। क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी मैथ्स मिला है, उसका क्वेश्चन कर लो। असाइनमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, ए सेक्शन बी सेक्शन का क्वेश्चन बना लो, सी सेक्शन बी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एबीसी एनसीईआरटी मैथ्स हो जाएगा क्वेश्चन। और तुम लोग को शायद एक प्रैक्टिस टेस्ट भी क्वेश्चन दिया गया है, नहीं दिया गया है, देख लीजिएगा शायद आई ट्यूटर में हो। Neurotransmitter actually two different type. One is excitatory neurotransmitter or stimulatory, and second is inhibitory. What are the neurotransmitter which are excitatory? Acetylcholine क्या होगा? Excitatory की inhibitory है? Inhibitory. नहीं तो फंस गए आप लोग। 71 पेज में 12 नंबर क्वेश्चन क्या 71 पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिक्कत है? टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है? ज्यादा होगा तो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर आप लोगों का जो बॉडी में इंक्रीज करता है, आप खुद सोचिए, आपका सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? ठंडे में आप लोग का सेंसिटिविटी डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है? आप किसी ठंडे एरिया में जाइए, आपको फील नॉर्मल होगा या नहीं होगा? कम होता है। टेम्परेचर बढ़ने से सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है, ये कॉमन सेंस है। सो न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी, उसमें एग्जांपल कौन आ जाएगा ना? दैट इज एसिटाइलकोलिन, second is epinephrine, third is norepinephrine, and glutamate. Epinephrine and norepinephrine togetherly called as what? Catecholamine. बात वो नहीं है, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी में मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक एसिटाइलकोलिन का क्या है? मैं स्टिमुलेटरी। आप एसिटाइलकोलिन को इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बोल सकते हो। एसिटाइलकोलिन इज ए स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बट आल्सो पोजेस इनहिबिटरी प्रॉपर्टी, लेकिन मोस्टली क्या है? स्टिमुलेटरी। ठीक है,
नॉट ओनली एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो तीनों हार्मोन है ना, इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट भी है, इनहिबिटरी इफेक्ट भी है। कहीं कहीं पे एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेटरी प्रोसेस करता है, कहीं पे इनहिबिटरी भी करता है। कहीं पे एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन स्टिमुलेटरी भी करता है, कहीं पे इनहिबिटरी भी करता है। हम दिखाएंगे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। हाँ, एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक में क्या करता है ना, सीक्रेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एसिटाइलकोलिन आता है, तो एसिटाइलकोलिन उसको हार्ट रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन सेम एसिटाइलकोलिन डाइजेस्टिव ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, सेम एसिटाइलकोलिन पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करता है। कहीं पे स्टिमुलेटरी भी है, कहीं पे इनहिबिटरी भी है, लेकिन मोस्टली क्या है, स्टिमुलेटरी। इसीलिए वो स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के अंडर आ जाएगा। इनहिबिटरी में डोपामिन, गाबा, that is gamma aminobutyric acid, glycine, then we can say that is serotonin. These are the neurotransmitter which are mostly inhibitory in nature. तो ये बस याद रखना है, एसिटाइलकोलिन को आप गलती से भी इनहिबिटरी मत बोलना। इसीलिए मैंने आपको बोल दिया, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन बोथ स्टिमुलेटरी एज वेल एज इनहिबिटरी, लेकिन मोस्ट कैरेक्टर क्या है उसका, स्टिमुलेटरी। We are coming to the central nervous system. Complete है? Correct हो गया कि नहीं? So we are coming to the next phase. Central nervous system. Central nervous system (CNS) is comprises of brain and spinal cord. We know it. Before coming to the CNS, we need to first discuss about the meninges. Meninges. Meninges actually three-layered protective covering around the CNS. So it is the around CNS, the three-layered protective covering. Let's have a diagram of this.
तीन लेयर है, जो आउटर लेयर है दैट विल बी क्लोज टू द क्रेनियम और दैट विल बी क्लोज टू द ब्रेन। जो इनर होगा वो क्या होगा, क्रेनियम या ब्रेन। इनर होगा क्लोज टू ब्रेन होगा, लेकिन जो आउटर होगा वो क्या होगा, क्लोज टू क्रेनियम। इफ इट इज ब्रेन, अगर ब्रेन की बात करें तो क्रेनियम होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 1। ये हो गया cranium। This is the dura mater। dura mater outer है, and this is called as hard mother। Mother actually protects their baby। तो यहाँ पे ये तीनों लेयर क्या है, अल्टीमेटली दे आर प्रोटेक्टिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ। दैट इज व्हाट इज doing the same function as the mother is doing for the baby, but it is made up of what, में tough connective tissue। क्योंकि ये टफ कनेक्टिव टिश्यू से बना है, इसीलिए हार्ड हुआ कि सॉफ्ट हुआ, इसीलिए हार्ड मदर उसको बोलते हैं। And it is close to cranium। Next is the cavity present called as subdural space। Subdural space is air-filled cavity। This is air-filled cavity। This layer is called as arachnoid membrane। Arachnoid membrane। And this layer is called as pia membrane। In between the arachnoid membrane and pia mater, there is a space called as subarachnoid space। And this subarachnoid space is filled with what? CSF। It is filled with CSF। pia mater को हम लोग बोलते हैं, that is the inner one, soft mother। That is why it is called as delicate connective tissue। And it is close to what? Close to CNS or brain। अगर ये ब्रेन हुआ तो CNS में हम ब्रेन लिख सकते हैं, अगर ये डायग्राम स्पाइनल कॉर्ड का हुआ तो क्लोज टू स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज इट इज द meninges which is covering not around only brain, it is covering around what, both brain and spinal cord। तो ये जो तीन लेयर हम देख रहे हैं, ये ब्रेन में भी है, स्पाइनल कॉर्ड में भी। क्योंकि हम यहाँ पे इसको इंडिकेट किए हैं एज ए ब्रेन, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर क्रैनियम लिखा। क्रैनियम लिखा मतलब समझ आइए ब्रेन का टिश्यू। अगर हम क्रैनियम नहीं लिखते तो आप
बोल सकते थे कि ये स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, पर क्योंकि हमने डायग्राम में यहाँ पे क्रेनियम मेंशन किया है, दैट indicate that it is the meninges we are drawing around the brain tissue. समझ में आ गया? एक अदर डायग्राम है, एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एपिड्यूरल स्पेस. In spinal cord, another space present around dura mater, present upper or above dura mater. It is called as epidural space. Epidural space जो air filled है, that is only found in what? Spinal cord or both spinal cord and brain. Epidural space कहाँ पे present है? सिर्फ spinal cord में present है, brain में ये absent है. So we are coming to the brain part. अभी हम लोग start करेंगे brain. Now we have completed the common portion of the brain and spinal cord. Now we are coming to the structure of classification and the description of the brain part. Brain is called as encephalon. Encephalon. Brain derived from pre-embryonic component. Brain derived from three embryonic component. ये three embryonic component क्या क्या है? The prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. The prosen, meson, and rhomben. These are not the type of or the part of the brain. ये कोई part of the brain नहीं है. Prosen, meson, and rhombencephalon. These are actually the embryonic structure from which the forebrain, midbrain, hindbrain forms. The prosencephalon is not otherwise called as forebrain. Mesencephalon is not otherwise called as midbrain. ये wrong concept है. फोरब्रेन का अदर नेम प्रोजेंसेफेलॉन नहीं है, बट फोरब्रेन किससे बना है? प्रोजेंसेफेलॉन. एंड प्रोजेंसेफेलॉन क्या है? एम्ब्रियोनिक कंपोनेंट है. तो प्रोजेंसेफेलॉन gives rise to forebrain. एंड प्रोजेंसेफेलॉन के अंदर दो पार्ट है. एक है डायनसेफेलॉन. डायनसेफेलॉन में आ जाएगा आपका एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. टेलेनसेफेलॉन. टेलेनसेफेलॉन के अंदर आ जाएगा आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, corpus striatum, hippocampus, and amygdala. ये दो पार्ट है प्रोजेंसेफेलॉन के अंदर. वैसे ही मेसेंसेफेलॉन, mesencephalon gives rise to
मिड ब्रेन। एंड मिड ब्रेन के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट है, एंड वो क्या है? कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना व्हिच कम्स अंडर द मेसेंसेफेलम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। थर्ड वन इज rhombencephalon. Rhombencephalon gives rise to hindbrain. एंड यहाँ पे दो पार्ट है, जैसे कि माइलेनसेफेलॉन। माइलेनसेफेलॉन में मेडुला ऑब्लंगेटा आ जाएगा, एंड मेटेनसेफेलॉन में आ जाएगा सेरिबेलम एंड पॉन्स फेरोडी। सो दीज आर द थ्री पार्ट आप लोग पढ़े हो, सेरिबेलम, pons and medulla oblongata. These three are the part of what? Hindbrain, yes or no? So माइलेनसेफेलॉन के अंदर आ जाएगा मेडुला, oblongata, सेकेंड हो गया मेटेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन के अंदर सेरिबेलम and pons. So these are the total structure we are going to discuss under the brain topic. मैं एकदम एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स यहाँ से क्वेश्चंस आता नहीं है। मैं एकदम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाने के लिए ट्राई करूंगा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, दैट इज सेपरेट थिंग, बट ऑलमोस्ट आई विल ट्राई टू कंप्लीट और ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट विद इन द एनसीईआरटी बेस्ड। स्टार्ट करते हैं। फोरब्रेन, so forebrain is formed of three distinct parts. तो हम लोग तीन डिस्कशन करेंगे, तीन पार्ट यहाँ पे डिस्कशन करेंगे फोरब्रेन के अंदर। नंबर वन इज योर दैट इज olfactory lobe, second is cerebrum, third is diencephalon. First we are coming to olfactory lobe. Supposed to be this is actually the olfactory bulb. This is olfactory tract, and this is olfactory area. These togetherly called as olfactory lobe. तो olfactory lobe paired है कि unpaired है? हाँ, paired है। फंक्शन क्या है? ना perceive or receive the smell, olfaction. उसका फंक्शन है टू रिसीव द सेंसरी स्टिमुली इन द फॉर्म ऑफ स्मेल और ऑल्फैक्शन। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे नोज टॉपिक में। अभी यहाँ पे इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसका फंक्शन रिलेटेड वहां पे देखेंगे,
एंड वहां पे मैं बताऊंगा आपको क्रिब्रीफॉर्म प्लेट जो इथमॉइड बोन था उसका रिलेटेड आपको मैं कंसेप्ट बता दूंगा. So this is all about the olfactory lobes. Now we are coming to the cerebrum. ठीक है. हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, मैं आपके लिए वेट नहीं करूंगा. सुनेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, रिप्लाई भी देंगे. एवरीथिंग शुड बी कोऑर्डिनेटेड. अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. वन एरिया इज प्रेजेंट इन द ब्रेन कॉल्ड एज एसोसिएशन एरिया. पढ़े हो? We can smell, we can feel the touch, we can see, we can feel the taste at a time. इसीलिए यहाँ पे भी एट ए टाइम होगा. सुनना है, लिखना है, समझना है, रिप्लाई देना है, सब एक साथ होना चाहिए. मतलब एसोसिएशन एरिया शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड एसोसिएशन पर एक्टिव होना चाहिए. लेट्स कम टू द सेरेब्रम. Cerebrum, the largest part of brain. ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है. मान लेते हैं 80% ऑफ द टोटल ब्रेन is formed of which partner? Cerebrum, and is formed of two cerebral hemispheres. सपोज टू बी कोई लेफ्टी है तो उसका कौन सा सेरेब्रल हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव है? राइट. Because the right control the left part of the body and the left control right part of the body. Right control the right cerebral hemisphere control the left part of the body and it is vice versa. And each cerebral hemisphere with gyri and sulci. What is the meaning of gyri? Singular gyrus. तो gyri क्या है? Elevated part है कि depressed part है? Elevated. And sulci depressed part. मतलब मैं समझा देता हूं. देखिए, इमेजिन करने से बहुत कुछ इजी हो जाता है. समझ में आ रहा है ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये एक सपोज टू बी ट्यूब मान लेते हैं. इस ट्यूब का ये पार्ट क्या है? एलिवेटेड पार्ट है कि डिप्रेस्ड पार्ट? हाँ. एंड फोल्डिंग पार्ट कौन सा है बीच में? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक ट्यूब है, ये दूसरा ट्यूब है. तो ट्यूब और ट्यूब के बीच में ये एक फोल्डिंग पार्ट आएगा कि नहीं? दैट फोल्डिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? ना सल्की. एंड द एलिवेटेड पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? गायरी. ऐसे आपका ब्रेन में ये गायरी सल्की ऐसे प्रेजेंट है कि नहीं? एंड दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया. तो गायरी एंड सल्की का प्रेजेंस की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज करता है. एंड इंक्रीज सरफेस एरिया मींस नंबर ऑफ न्यूरॉन विल बी हाईएस्ट. जितना ज्यादा सरफेस एरिया हाई होगा, नंबर ऑफ न्यूरॉन का क्या होगा? ना मोर होगा. And that ultimately directly associated with the IQ, the intelligence level of an organism or the individual.
That is, animal is depends on the increasing surface area and the accommodation of the number of neuron present in that. And human being के केसेस में ये जो गायरी एंड सल्की है ये इतना ज्यादा ब्रांचिंग है, इतना ज्यादा फोल्डेड है कि surface area highly increase, and that is directly related with what? The increasing cranial capacity. So with the human evolution ये गायरी सल्की का क्वांटिटी बढ़ा है कि डिक्रीज किया है? इंक्रीज किया है, and that leads to the increasing of the cranial capacity. सब रिलेटेड है. Supposed to be this is to cerebral hemisphere. ठीक है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर ऐसे बहुत सारा ऐसे सल्की आपको दिखेगा. यस और नो? ऐसे बहुत सारा सल्की आपको दिखेगा कि नहीं? प्लस गायरी आल्सो. But few sulci are there which is highly developed like this. And these sulci have divided the total cerebral hemisphere into what now? 4 distinct lobes. Look, so many sulci are there. लेकिन कुछ sulci देखिए इतना ज्यादा prominent है, इतना ज्यादा developed हुआ है कि each cerebral hemisphere has been divided into 4 lobes. This is frontal lobe. This is temporal lobe. This is parietal lobe. And this is occipital lobe. This is frontal, this is parietal, this is temporal, this is occipital. And this is the 2 cerebral hemisphere. And this is the folding which is present in between 2 cerebral hemisphere is called as what? Na central sulcus or central fissure. नहीं इसको median fissure लिखे, central अलग है, median fissure. This is called as median fissure. Fissure or sulcus. The sulcus which is present in between the frontal and parietal. Frontal and parietal के बीच जो है वो है central sulcus. The sulcus which is present in between the frontal parietal with temporal is called as your lateral sulcus. Or salvian fissure. And the sulcus which is present in between the parietal and occipital is called as parieto-occipital sulcus. ये एक जनरल व्यू हो गया कि क्या प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है. देखिए अगर हम लोग प्रैक्टिकली जाएं
कौन है, क्या हुआ? सर प्रियंका बोल रही हूँ, गुड आफ्टरनून। एक बार डिस्टर्ब कर रही हूँ सर। एक बोलिए। अनाउंसमेंट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन में स्टूडेंट। सबको सुनाई दे रहा है, कोई रिप्लाई नहीं देगा, आप बोलते जाइए। ओके सर। Actually, tomorrow the AIATS exam will be held from 9 a.m. to 12:20. In the test plan, it was written that it will be from 3 p.m. But actually, the test will be held from 9 a.m. to morning. सुबह 9 बजे से टेस्ट रहेगा AIATS का। ओके ओके, आप लोग भी थैंक यू समझ सर। गए? हाँ, थैंक यू। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो actually what actually happened कि frontal, parietal, temporal and occipital, these are actually concerned with the presence of different type of what na area. There are different type of areas are there. मैं area के details में जाना नहीं चाहता हूँ, questions वहां से बिल्कुल नहीं आता है। जो एरिया आता है वो मैं आपको डिस्कशन करूंगा, जैसे कि मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, प्रीमोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया, your that is gustatory area, smell area, taste area, vernix area. 9 different types of area are there, and every area is present within the cerebral hemisphere. Maybe in the frontal, maybe in the parietal, maybe in the occipital, maybe in the temporal. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एरिया का प्रेजेंस, एरिया का लोकेशन हमेशा क्वेश्चंस में नहीं आता है। हम लेकिन एक चीज डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाट ना 3 मेन एरिया प्रेजेंट इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 3 मेन एरिया प्रेजेंट इन cerebral hemisphere is number 1 sensory area, sensory area receive the sensory stimuli. The sensory area will receive the sensory stimuli, and ये sensory stimuli कुछ भी हो सकता है, हम लोग पढ़े थे। sensory stimuli may be in the form of temperature, may be in the form of that is touch, may be in the form of taste, may be in the form of smell, कुछ भी हो सकता है। Number 2 motor area. Motor area that control the motor function. मोटर फंक्शन कहाँ पे होता है? स्केलेटल पार्ट में होता है कि नहीं? मोटर फंक्शन मतलब मसल्स को कंट्रोल करेगा एंड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। So motor area will control the motor function like your muscles and gland. And number 3 association area. देखिए एसोसिएशन एरिया, association area is actually related with what? The association area is related with the responsible for some complex functions. We'll do some complex function. And what are the complex functions? Like number 1, बात मत करिए क्लास में, ठीक है? Number 1 is intersensory association. अभी हम बात कर रहे थे, हम लोग एक साथ सब कुछ फील कर सकते हैं, राइट?
हम मूवी देखने के लिए गए हैं तो पॉपकॉर्न का मजा भी लेते हैं, सुनते भी हैं, फिल्म देखते भी हैं, और कोई अगर सीट में कोई काट दिया कोई कीड़ा, उसको फील भी करते हैं। तो इंटर सेंसरी एसोसिएशन, इट इज रिलेटेड विथ व्हाट? द एसोसिएशन एंड इंटरकनेक्शन, association and interconnection of different sensation, association and interconnection of different sensation for their proper interpretation. So that we can smell, taste, touch, etc. at a time. समझे कि नहीं समझे? ये intersensory association comes under which area? Association area. So intersensory is the one of the function. Number B function comes under the association area is memory. Memory. मेमोरी किसको बोलते हैं? पास्ट इवेंट अगर आपके ब्रेन में रिकॉर्ड नहीं होगा तो क्या ये मेमोराइज पॉसिबल है? So past event are recorded here. Past events are recorded here along with frontal lobe. Along with the frontal lobe. तो फ्रंटल लोब, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि फ्रंटल लोब मेमोरी में हेल्प करता है कि नहीं? फ्रंट साइड में जो फ्रंटल लोब है that is also associated with the memory, as because the association area will do the function of memory along with the frontal lobe. And memory दो टाइप का होता है, both short term memory and long term memory. So both the short term memory and long term memory is associated with the association area. This is the function number 2, and function number 3 is communication. This is the third function of association area, the ability of communication. Means sensory impulse with motor impulse. तो सेंसरी इंपल्स को मोटर इंपल्स के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है, अदरवाइज ये कैसे ये मॉड्यूलेट होगा? सो मॉड्यूलेशन का मतलब होता है सेंसरी टू कॉम्प्लेक्स, दैट इज व्हाट ना मोटर। एक तो मॉड्यूलेशन का काम ब्रेन करता है, दूसरा करता है स्पाइनल कॉर्ड। तो व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द मॉड्यूलेशन एक्टिविटी, कम्युनिकेशन एक्टिविटी? ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज एसोसिएटेड विद द थ्री एरिया। ये मैंने आपको सीधा एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया, फ्रंटल, पैरेटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। ये सब डायग्राम, ये सब जो फंक्शन वगैरह हम लोग पढ़े थे, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि फ्रंटल का फंक्शन क्या है, पैरेटल का फंक्शन क्या है, टेम्पोरल का फंक्शन क्या है, कौन सा एरिया कहाँ पे है, बिल्कुल जरूरी नहीं। यू कैन रीड इट फ्रॉम योर स्टडी मैट, आप रीड कर सकते हैं, आपके बुक्स पे दिया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। क्वेश्चन सीधा सीधा इस तीन चीज से आएगा, सेंसरी, मोटर, एसोसिएशन। एसोसिएशन में फंक्शन क्या है ना, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। क्लियर है? वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, द नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। यू नो दैट इज कॉर्पस कैलोसम, आप लोग पढ़े हैं? ठीक।
ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर मैंने लिखा था ये कौन सा है ना, एक्चुअली सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये जो 3 एरिया मैंने दिखाया ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है। सेरेब्रल मेडुला में ये सब एरिया नहीं है। These are the present in the cerebral cortex. तो मैं यहाँ पे लिटरली मेंशन कर देता हूँ, cerebral hemisphere is with 2 parts, cerebral cortex and cerebral medulla. कॉर्टेक्स में क्या होगा, व्हाइट मैटर की ग्रे मैटर। क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर होता है इनर, आउटर होता है व्हाइट, ब्रेन में होता है ऑपोजिट। मतलब ग्रे हो जाएगा आउटर, व्हाइट हो जाएगा इनर। एंड कॉर्टेक्स क्या है, आउटर है कि इनर है? तो आउटर इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, ना ग्रे मैटर, whereas medulla is inner and it is formed of white matter. And आपको मैंने क्लियरली बताया था क्लासेस में कि white matter is because of the presence of the myelin sheath. myelin sheath का कलर होता है white, that is why it is made up of myelinated nerve fiber, whereas the white matter is without myelin sheath, so it is made up of unmyelinated nerve fiber. Clear है? Now we are coming to the connection between the two cerebral hemisphere is called as what, the corpus callosum. क्या बोलते हैं उसको, corpus callosum. Corpus callosum made up of what? It is a connective tissue or it is a nervous tissue. क्या है corpus callosum? Corpus callosum is connecting two cerebral hemisphere. Nervous की non nervous, connective की non connective. Connective नहीं है ये, इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि corpus callosum is a structure which connecting two cerebral hemisphere is made up of dash, connective tissue, nervous tissue. क्या है ये, nervous tissue है, इसमें न्यूरॉन्स हैं एंड इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस आ जाता है. It is a bundle of nerve fiber. It is a bundle of nerve fiber called tract, which connect to cerebral hemisphere. तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेगा, what is tract and what is nuclei? Anybody can tell me what is the difference between the tract and nuclei? मैंने ट्रैक्ट का ऑलरेडी डेफिनेशन लिख चुका है ऊपर, बंडल ऑफ nerve fiber in CNS is called as what, not tract. Whereas different collection of neuron in CNS is called as what, nuclei. इसीलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया इज कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई, whereas corpus callosum क्या है, corpus callosum is not a nuclei, it is a tract. Basal ganglia is a nuclei, whereas corpus callosum is a tract. And what is the difference between the tract and what is the definition of nuclei? You need to remember. बहुत simple definition. Tract is the bundle of nerve fiber and nuclei is the different collection of neuron.
both in the CNS. Complete है? बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाके कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं शॉर्टकट और जितना इंपॉर्टेंट है बस वही डिफरेंस खत्म करके निकल रहा हूँ. किसी को कोई प्रॉब्लम? So I am coming to the next part, that is basal ganglia. Collection of न्यूक्लियाई. मतलब यहाँ पे कौन सा है वो न्यूक्लियस, वो सेल वाला न्यूक्लियस नहीं है, अभी हम लोग पढ़े. The association or the collection of different neuron is called as what? The nucleus. Plural हो गया nuclei. It is the collection of nuclei below cortex. इसीलिए बेसल गैंग्लिया को हम लोग बोलते हैं सब कर्टिकल न्यूक्लिया. Why it is called as subcortical nuclei? Because it is a collection of nuclei below the cerebral cortex. And the largest nucleus is called corpus striatum. अभी हम लोग corpus striatum का वर्ड मेंशन किए थे कुछ देर पहले. तो corpus striatum is a part of what? ये आपको असाइनमेंट में मिलेगा, क्वेश्चंस में मिलेगा. Which of the following is not a part of dash? Which of the following is not a part of hypothalamus? Which of the following is not a part of limbic system? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बेसल गैंग्लिया के अंडर corpus striatum आता है, तो corpus striatum is a part of basal ganglia. तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे. It secretes a neurotransmitter called dopamine. तो बेसल गैंग्लिया का मेन फंक्शन क्या है? क्या सीक्रेट करता है ये? क्या सीक्रेट करता है? डोपामिन. एंड डोपामिन क्या था? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. अब मैं आपको कहानी बता रहा हूं कि आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शन में जो होता है, ऑपरेट होता है आपका बॉडी का एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द स्टीरियोटाइप मूवमेंट. क्या बोलते हैं उसको? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप मूवमेंट? याद रहना चाहिए, मैं आपको बाद में पूछूंगा फिर रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम. हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा हाथ पैर ऐसे नॉर्मली हिल रहा है कि नहीं, हम आपको इंडिकेट करके समझा रहे हैं कि नहीं. तो दैट मूवमेंट व्हिच इज ऑकर्स इन जनरल इज कॉल्ड एज स्टीरियोटाइप मूवमेंट. तो डोपामिन क्या करता है ना, स्टीरियोटाइप मूवमेंट को कंट्रोल करता है. अगर डोपामाइन इनहिबिट हो गया, सिक्रेशन कम हो गया, then gives rise to what? The stereotype movement will not coordinated in the body. आपका body function और slow down हो जाएगा. And that gives rise to the disease called as what? The Parkinson's disease. So we are coming to the heading, disorders of brain. Number 1, Parkinson's disease or paralysis agitans. Parkinson's disease or paralysis agitans. एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको कार्पस स्ट्रिएटम लिखा है ना, कार्पस स्ट्रिएटम में लिख दीजिए, इट रेगुलेट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ
प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टीरियोटाइप मूवमेंट। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टीरियोटाइप मूवमेंट। एंड स्टीरियोटाइप मूवमेंट का मतलब मैंने क्या बताया ना, कन्वेंशनल एक्टिविटी और नॉर्मल। कन्वेंशनल और नॉर्मल एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, स्टीरियोटाइप। So all the stereotype movement of the body is regulated by the corpus striatum which secrete the dopamine. So Parkinson में यही कम हो जाता है due to deficiency of dopamine. Due to secretion of deficiency of the dopamine, dopamine हम लोग पढ़े थे inhibitory neurotransmitter. तो उसके वजह से सिम्टम्स क्या होगा, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर मूवमेंट, so that results into poor balance and coordination. तो दोनों साइड में दोनों हाथ दोनों पैर आपका ठीक से सही तरीके से कंट्रोल नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, सो इनबैलेंस हो जाएगा, बॉडी का जो मूवमेंट है वो इनबैलेंस्ड होगा because the dopamine is controlling or activities under the control of stereotype movement. So poor balance and poor coordination and the lack of control about the movement, ultimately balance यहाँ पे imbalance हो जाता है, उसके वजह से एक्टिविटी पूरा स्लो डाउन हो जाता है। नंबर 2, हंटिंगटन्स कोरिया। हंटिंगटन्स कोरिया, हंटिंगटन्स कोरिया में क्या है, नहीं यहाँ पे ये पहली बात तो ये एक जेनेटिक डिजीज है, हेरिडिटरी डिजीज है, डोमिनेंट ऑटोसोमल डिजीज, मतलब ये डोमिनेंट ऑटोसोमल 4th क्रोमोसोम में होता है। तो आप लोग इसको जेनेटिक्स में पढ़ोगे, डोमिनेंट ऑटोसोमल 4th क्रोमोसोम में ये प्रॉब्लम होता है। सो इट इज अल्टीमेटली a hereditary disease, genetic disease due to deficiency of GABA and acetylcholine. एंड GABA तो इनहिबिटरी है, acetylcholine तो स्टिमुलेटरी है, that will give rise to progressive loss of motor coordination. सिर्फ याद रखना है तो उसका कॉज याद रखो। पार्किंसन का कॉज क्या है ना, डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन। हंटिंगटन्स कोरिया का कॉज क्या है ना, डेफिशिएंसी ऑफ गाबा एंड एसिटाइलकोलिन। नंबर 3, अल्जाइमर डिजीज में आते हैं, बहुत ही पॉपुलर डिजीज है। अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज ड्यू टू vast number of neuron destroyed in hippocampus and loss of acetylcholine. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा चीज बताऊंगा।
हम थोड़े ही देर में डिस्कशन करेंगे कि वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस, व्हाई इट इज कॉल्ड सो? हिप्पोकैम्पस एक्चुअली मीनिंग क्या है? आप लोग पढ़े हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स? अरे नहीं पढ़े हो क्या? सी हॉर्स, अ टाइप ऑफ bony fish found in the marine water aquatic habitat. उसका हेड एंड नेक जो होता है हॉर्स लाइक होता है. दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एज सी हॉर्स. इट इज अ फिश. अब ब्रेन के पार्ट में ऐसे सी हॉर्स का अपीयरेंस एक है. एक ब्रेन का पार्ट है जहाँ पे हॉर्स के जैसे ही दिखता है, सी हॉर्स के जैसे ही एक अपीयरेंस रहता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हिप्पोकैम्पस. And this hippocampus is related with what? Na conversion of short term memory into long term memory. Short term memory को अगर long term में convert नहीं किया जाएगा तो you cannot learn that. So need for the learning, essential for learning, conversion of short term into long term. So short term memory change into long term memory because of the hippocampus. अगर हिप्पोकैम्पस का न्यूरॉन फास्ट नंबर में डिस्ट्रॉयड हुआ तो क्या मेमोरी आपका कन्वर्ट हो पाएगा फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म? हो पाएगा? सो द पर्सन इज अनेबल टू मेमोराइज. जो रिसेंट मेमोरी है वो भूल जाएगा, क्योंकि रिसेंट मेमोरी को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए उसको याद रखना पड़ता है. एंड याद कौन कराता है? हिप्पोकैम्पस. इसीलिए हम लोग भूल जाते हैं अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हुआ तो. सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या होगा? ना ट्रबल इन रिमेम्बरिंग द रिसेंट इवेंट. Trouble in that is remembering the recent event, and later on fail to recognize the relatives. And number 4 लास्ट में आते हैं, that is your schizophrenia. Number 4 schizophrenia. Schizophrenia, the disease which is related with what? Increased dopamine. मैं यहाँ पे इसीलिए पढ़ा रहा हूँ लेकिन क्योंकि आप लोग का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर आएगा ना, वहां पे ये सब फिर से आ जाएगा. डोपामिन का फंक्शन पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देख लीजिएगा, एंड वहां पे ये सब वर्ड आ जाएगा. तो डोपामिन अगर इंक्रीज करता है तो होता क्या है ना, डोपामिन एक्चुअली हैप्पी हार्मोन होता है. डोपामिन क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर है, तो ये स्टिमुलेशन को इनहिबिट करता है, सप्रेस करता है, इसीलिए पर्सन को थोड़ा सा हैप्पी फील कराता है. तो अगर डोपामिन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो बॉडी में जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाएगा, मतलब जो थॉट है वो अल्टर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड दैट अल्टरेशन ऑफ थॉट इज कॉल्ड एज व्हाट? हेलुसिनेशंस. क्या बोलते हैं उसको? सो यहाँ पे मेन हेलुसिनेशन तो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो इसको नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा कैसे? Hallucinations and disordered behavior. बिहेवियर जो वो नॉर्मल रहेगा, डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, एबनॉर्मल बिहेवियर रहेगा, एंड दैट वी प्रैक्टिकली कॉल्ड एज व्हाट? द hallucinations. So it is
देखो 4 डिजिट मैंने बताया, वो चारों डिजिट में सिर्फ आपको याद क्या रखना है, कॉज। इंक्रीज डोपामिन लीड्स टू डैश, डिक्रीज डोपामिन लीड्स टू डैश। डिक्रीज डोपामिन लीड्स टू व्हाट, पार्किंसंस। इंक्रीज डोपामिन लीड्स टू स्किज़ोफ्रेनिया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है?